चैनल। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, आप में से काफी जो लोग हैं वो मेरे चैनल की वीडियोस देखते तो है, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। प्लीज पहले सब्सक्राइब करते हैं, फिर आगे चलते हैं। वैसे आई एम अ होम स्कूलिंग किड और हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स घर में करते रहते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें टिश्यू पेपर टेक्सचर्ड आर्ट बनाया जा रहा था, तो क्यों ना आज हम मिलके वो आर्ट बनाएं? लेट्स गो। So the things we required are tissue paper roll and glue and these colors. You can take any color of your choice. I'm taking these acrylic ones. These are the neon color. These are the neon color from Bluebird. You can take card sheet, but I'm making from my scrapbook. And take a bowl of water. Let's start the activity. We need to make a big flower. Mama will do the sketching for me. मामा कहती है मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं लगती है, इतनी अच्छी नहीं होती है। सो आप डिसाइड करें ये फ्लावर वो कैसा बना रही है। Now we have drawn my flower on this scrapbook. We need to cut tissue paper in small pieces and put it in the water and dip it in the water. हम बारीक बारीक काटेंगे ताकि हमारा टेक्सचर आर्ट अच्छा बने। If you are a kid, so don't use scissors. You can do with your hand. If you're using scissors, do it in the supervision of grown-ups. I have taken little bit to make the center part of my flower. Now let's add some glue into this. Mix it well with the glue. इसमें हम करेंगे येलो कलर ऐड और कलर डालेंगे ताकि ये गीला हो जाए। Put a little bit of glue in the center of your flower. You have to pick it and yeah. Wow! you have to pick. Looks like yellow coleslaw, but it's made with cabbage and carrots. So it's don't look like coleslaw, but it's cooking. You can take help तो from a ऐसे इसको grown-up. लेना है, इससे यूं करके पिक करना है और यहाँ लाके इसको छोड़ देंगे। ये बन गया हमारा सेंटर, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारा टिश्यू पेपर बच गया। अब हम कम लेंगे, हल्की सी वाली खाली, और उसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। Now we have to repeat the same process for the other color.
with an amazing video. Until then, bye bye and subscribe to my channel.